सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा च। In today's one concept today, we are going to cover the topic of governance and the understanding of good governance. Now, what basically is the idea of governance? Governance hunda ki hai? Governance basically can be understood as an idea where the system of the state, that is the state itself, with the coordination of the people, the civil societies, etc., try to utilize the resources available for the welfare of the people or for the better development of the society. कि जो resources साढ़े को available होंगे हैं, that resources are utilized for the better socio-political and economic development of the people, for the better social, economic, political betterment of the society as a whole. कि किन्नी वधिया तरीके नाल, how much or in what better way we can utilize those resources, we can utilize those concepts, that primarily is an understanding of the idea of governance. Now, as per the definition of United Nations Development Program 1997, governance is defined as the exercise of economic, political and administrative authorities to manage countries' affairs at all level. कि जो कंट्री की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती हैं, जिनको हम आइडिया बोलते हैं द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट और द पावर होल्डर्स, तो जो ये पावर होल्डर्स होते हैं, ये पावर होल्डर्स किस प्रकार से, किस तरह से, how these power holders are trying to utilize the areas or trying to utilize the available resources for them, available resources to them for the better rights of the people or for the better utilization of the people. कि किस तरह से the resources that are available उनको किस प्रकार से better utilize or how they are best utilized for the betterment of the people. That is what is the understanding of governance. Now, in the easier term, governance is the process and the institutions through which the decisions are made and authority in a country is exercised. Right? कि आपके सामने फैसला है. Now, if you continue to keep on delaying the fact, that is not good governance. Right? कि आपके सामने फैसला, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, ठीक है ना, आप बैठे हैं हाथ पे हाथ धर के कि करना क्या है, तो वो गवर्नेंस का मेथड नहीं है. आपको पता है कि इफ देयर इज अ थ्रेट, इफ यू हैव टू टेक अ डिसीजन और इफ सम डिसीजन हैज टू बी टेकन ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, सो द बेस्ट मेथड इज टू टेक दैट डिसीजन इन अ बेस्ट पॉसिबल और अ अर्जेंट पॉसिबल मैनर. Now, the concept of governance has been elaborated or it has expanded its tentacles. उसमें लगातार वो बड़ा होता जा रहा है, लगातार वो बढ़ता जा रहा है. कि पहले तो सिर्फ हम नेशनल गवर्नेंस की बात करते, स्टेट लेवल के ऊपर गवर्नेंस की बात होती थी, फिर लोकल, जिसको हम लोकल गवर्नेंस कहते थे, फिर हमने कहा कि यार जो छोटे लेवल पे गवर्नेंस होती है, जैसे आपकी ग्राम सभाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उसके बाद आपकी स्टेटें आ गई, स्टेट्स के ऊपर भी आपकी सॉरी लोकल गवर्नेंस आता है, फिर आपका नेशनल लेवल के ऊपर देश की सरकार बनती है. अब क्या हो चुका है, कॉस्मोपॉलिटिज्म का, ग्लोबल अफेयर का जमाना है, तो ग्लोबल गवर्नेंस जैसी चीजें भी आती हैं, जहां पर यूनाइटेड नेशन जैसी चीजें इन ऑपरेशन आती हैं, और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग आती है किन चीजों की, इवन द कंपनीज एंड द ट्रांसनेशनल एक्टर्स, they have also introduced or they have also come up with the concept of governance, right? That is known as corporate governance. So कई सारे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में गवर्नेंस की अंडरस्टैंडिंग की जा सकती है, कई सारे डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स में या मैनिफेस्टेशंस में गवर्नेंस के आइडिया को समझा जा सकता है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस आइडिया ऑफ गवर्नेंस और व्हेन वी टॉक अबाउट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नेंस, so the understanding of governance has three important stakeholders. The idea of governance has three important stakeholders. One stakeholder is the state, the second stakeholder is the civil society, and the third stakeholder is the market. State, civil society and the market are the three stakeholders of the government, of the concept of governance. Now, the role of the state is that the state creates a positive atmosphere or a favorable climate, a positive atmosphere or a favorable climate in legal political manner, right? और legal political environment, कि जहां पे जो policies हैं, legal and political environment, so that the policies are better implemented or better available. कि जो सरकार policies बनाए वो पॉलिसीज बेटर हो, बेस्ट हो, ताकि जो लोग हैं उनके लिए बेहतरमेंट हो सके. फॉर एग्जाम्पल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि जब तक सरकार ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी, दैट द कंपनीज कैन कम एंड इन्वेस्ट, इट इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनीज, तब तक स्टेट या कॉर्पोरेट जो है, ये कंपनी जो है वो आके इंटरफेयर नहीं कर पाएंगी या फिर काम नहीं कर पाएंगी. सो द स्टेट हैज टू क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर फॉर बोथ द कंपनीज एंड द पीपल
That is what is the role of the state. Second understanding is the role of civil society. Now when we talk about civil society, this means people. So this civil society ensures mass participation, that the policies that have been framed by the government, so those policies need some support or those policies need some backing. तो वो जो policies हैं जो सरकार बना रही है, उन policies के लिए क्या करने की जरूरत है? उन policies के लिए there needs to be a mass participation or a mass support from the side of the people. So a mass participation is required and these people need to be mobilized so or for the support to the policies of the government. For the support of the policies of the government, that is what is the understanding of civil society. And the third understanding is the understanding of market. The third stakeholder is the stakeholder of market. Now market needs to create the opportunities for people. Market needs to create opportunities for people, right? The market or the idea of market needs to create the opportunity for the people, ताकि अगर सरकार फेवरेबल क्लाइमेट बना रही है, लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब नौकरियां या लोगों के लिए बेटरमेंट के तरीके, जरिए, जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज वो कहां से आएगी? वो काम किसका है? मार्केट का, राइट? So these are the three primary stakeholders of the understanding of governance. Now governance in a sense is a very generalized term, right? Governance can be good, governance can be bad, governance can be okay कि किस प्रकार की governance है, right? So what should be our aspiration or what should be our vision is that we should have a good governance, right? So good governance primarily is a prefix that is used with the understanding of governance. Good is a prefix that is used with the understanding of governance. So good governance implies a positive attributes and values associated with the quality of governance, right? A positive attribute associated with the quality of governance कि किस तरह से जो पॉजिटिवनेस है या पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है या पॉजिटिव वैल्यू सिस्टम है जो इस गवर्नेंस के साथ एसोसिएटेड है, गवर्नेंस के साथ लिंक्ड है. दैट इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस. नाउ दिस गुड गवर्नेंस is a very dynamic concept and it may change from situation to situation. जैसे ही इवॉल्व होता रहता है वैसे ही गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता है. जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है वैसे ही गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट भी इवॉल्व होता है. नाउ इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस देयर आर प्राइमरली these 8 understandings, right? These understandings: transparency, accountability, follows rule of law, responsive, equitable and inclusive, and consensus oriented. So these basically are the understandings of the idea of good governance. So if we talk about the understanding of the good governance, that first important understanding of good governance is the idea of participation. So when we talk about the idea of participation is that the people are participating in the formation of the good governance. कि यार सोसाइटी के लिए अपॉर्चुनिटी बनाना, क्योंकि देखो ना, participation is from the perspective of the masses. So if the masses participate in a better manner, then there shall be a good possibility or there is an establishment of good governance. कि सरकार के में participate कर रहे हैं, सरकार की activities में participate कर रहे हैं और साथ ही साथ simultaneously they are also monitoring the activities of the government. They are making the government answerable for the actions of the government. That is what is participation. Second understanding is consensus oriented, right? That the governance has to be consensus oriented. Consensus oriented, the government has to be consensus oriented. That means what is in the best interest of the society, that has to be ensured. What is in the best interest of the society, that has to be ensured. कि एक दो बंदों की बात नहीं होगी. The best interest of the entire community or the best interest of the whole community will be checked and the best interest of the whole community will be marked. That is what is consensus oriented. The third understanding is the idea of rule of law. Now rule of law is कि arbitrariness से दूर रखता है. Rule of law keeps us away from arbitrariness. कि आपको पता है कि यार ऐसा नहीं है कि फैसले बड़ी जल्दी नहीं बदलते, राइट? लॉ सबसे सुप्रीम है, किसी की कोई बायसनेस नहीं है, किसी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा. काम किस प्रकार होगा? काम होगा रूल ऑफ लॉ के बेसिस के ऊपर, राइट? द वर्क विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ. Next understanding is the understanding of transparency, right? That the system of governance has to be transparent.
कि ओपेसिटी में लोगों को पता ही नहीं होगा सरकार कर क्या रही है. Till the time the government is not transparent, the people cannot afford, or the people will not trust the government. So the trust on the government is very, very important. And how that trust will be ensured? That trust will be ensured if the government is transparent, if the information is freely available to the people. For example, right to information. राइट टू इंफॉर्मेशन. तो उसमें क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसी चीजों में, दैट द गवर्नमेंट और द इंफॉर्मेशन दैट द पीपल वांट टू नो, दैट इज फ्रीली अवेलेबल टू द पीपल फॉर द बेटर एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पीपल. द फिफ्थ अंडरस्टैंडिंग इज द आइडिया ऑफ दैट द अकाउंटेबिलिटी. Right, the understanding of accountable. Now this basically ensures that there is an acknowledgement of the actions of the government, that the government acknowledges what actions they take, and government basically is answerable to the people after acknowledging their actions. कि जब तक सरकार acknowledge नहीं करेगी कि उनके actions क्या हैं, वो responsibility नहीं लेगी अपने actions की, तब तक वो लोगों को जवाबदेही नहीं होगी. So that accountability is very, very important. Next understanding is the idea of responsiveness. जवाबदेही, responsiveness is that how quickly the government responsive or the government responds to the needs of the people. ठीक है, कि government responds to the need of the people. That is how, what is responsiveness? Because as of now, at the present moment, fast response is very, very important. कि एक बार किसान धरना हुआ, सरकार ने 1 साल लगा दिया उसका जवाब देने में, that is not responsiveness, that is not good governance. आज कुछ हो, सरकार के सामने मुद्दा आए, जितनी जल्दी हो सकता है, as soon as possible the government wants, the government should take the decision. But 1 साल तक ना सुनना, that is not what is good governance, that is not what is efficiency. The next idea is of E and E, that is efficient and effective. Efficient and effective. That the governance should be efficient and effective. कि सरकार जो है वो efficiently काम करे. Right, the government needs to work efficiently. That means the result has to be, or the government needs to be result oriented. ठीक है, ऐसे नहीं है कि बिना बात में खाली घूम रहे हैं कि पता नहीं करना क्या है, वेग नहीं काम करना, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंटली काम करना है, so that the institutions have, or the approach of the institutions needs to be result oriented. The approach of the institution needs to be result oriented. And last is equitable and inclusive. Equitable and inclusive. That means the action of the government has to be in a complete fair manner. कि जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा एक्शन लेना सरकार का जिम्मेवारी है. एंड साथ ही साथ the government needs to take a inclusive action. कि the government should make a policy which includes everyone, which is in the favor of everyone, not exclusionary policy. जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, वैसी बात जो है वो बात होनी चाहिए in the inclusive idea, so that no one should be left out of the developmental policies. So this is what is the understanding of governance and good governance. I hope you have liked the video and you have understood. I'll see you next time. Until then, thank you and take care.